all are driving into future rather, भविष्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो फिक्स्ड है रियर व्यू मिरर पर. Nearly every major power today is seeking to make its country great again. हर कोई लगा मैं अपने देश को महान बनाऊं. Getting inspiration from past. Now the slogans may differ, but the aspirations जो हैं वो इको करते हैं जो वर्ल्ड वॉर II से पहले सुनाई देते थे. In 1930s, Germany और इटली और जापान, they were led by ultra nationalists obsessed with making their countries great again. वो पुराने अपने एम्पायर की जो ग्रेटनेस थी उसकी लॉस्ट ग्लोरी को रिगेन करना चाहते. और प्रोपोगेंडा और स्लोगन्स क्या थे उस समय? वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर. The leader is always right. And these kind of slogans galvanized the masses. उनको hypnotize कर दिया था almost masses. Now बाकी world leaders जो थे वो exhaust हो गए थे World War I से, और their nations were crippled by economic depression of 1930s. तो वो they were looking the other way. They were indifferent to what Hitler और मुसोलिनी and these people were doing. बल्कि एक तरह का ये हो गया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स जो थे they were appeasing Hitler, right, so that they could avoid the conflict. और by the time जब वो रिएक्ट किए और रिस्पॉन्ड किए तब तक वॉर जो थी it had reached their doorstep. अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें वो सिचुएशन को आज के लिए, तो हम देखते हैं कि वही सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक उस समय लीग ऑफ नेशंस थी, आज यूएनओ है, दे हैव वीकेंड. पावरफुल नेशंस आर फ्लाउटिंग द रूल्स. जो टैरिफ्स हैं दे आर पावरफुल, सो दे इज फ्लाउटिंग द रूल ट्रेड WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से. रशिया वेजेस वॉर इन यूक्रेन, इजराइल बॉम्ब्स गाजा, और चाइना ऑल्सो इज एक्सपेंशनिस्ट. Genocide, forced migration, starvation have become state policy. And all this, surprisingly, किसी को कोई outrage नहीं हो रहा है. Everyone is indifferent to the misery of and sufferings of the people. Thousands of people have migrated from Ukraine, from Gaza. Thousands of people have been killed. और अकाउंटेबिलिटी पे किसी का कोई कंसेंसस नहीं हो रहा. इट इज कोलैप्स टोटली. नाउ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं इस दौरान, ड्रोन्स, बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर, दे आर रीशेपिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एज द टैंक्स एंड द एयरक्राफ्ट्स डिड दैट टाइम. Cities like Aleppo, Gaza are in total ruins today. अब हमारे पास क्या है? नेशनलिस्ट एंड हाइपर नेशनलिस्ट लीडर्स. मिस्टर ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. मिस्टर Putin, who wants to regain the old Soviet era glory. Mr. Modi trying to make अखंड भारत. And Mr. Xi Jinping, वो भी कोई दूर नहीं है. He is also trying to regain the lost greatness of China. Now, ये कोई फ्रिंज आइडियाज नहीं है, ये सब इलेक्शन विनिंग प्रोमिसेस हैं. नाउ मीनवाइल इन सब से क्या हो रहा है? स्मॉलर नेशंस आर बीइंग लेफ्ट वल्नरेबल. ताइवान, नेपाल, भूटान, फिलीपींस, एंड any country could be the next flashpoint. You never know which. Global events now erupt with absolute unpredictability. एक दिन सुबह आप उठते हैं तो आप देखते हैं, सुनते हैं कि कंबोडिया पे अटैक हो गया. इजराइल हैज बॉम्ब ईरान, लेबनान, सीरिया और इवन कटार. नाउ वन British Prime Minister, when asked by a reporter
about the 1967 crisis, Mr. Harold Macmillan का reply था. He said, events, my dear boy, events. So one event led to another, another event led to another, and they kept getting exaggerated. Polarization has deepened. The calls for unity often mask the majoritarian dominance. तो जब हम यूनिटी की बात करते हैं देश में, समाज में, तो ये बात करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी की यूनिटी, ना कि पूरे देश या समाज की यूनिटी की. तो इससे माइनॉरिटीज बिकम इनसिक्योर. जो अभी अमेरिका में जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कि पोलराइजेशन इतना डीपन हो गया है कि हम एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचक रहे. Nationalism has merged with religion and culture. Secularism is being branded as fraudulent. This rhetoric recalls the early days of Nazi Germany, which targeted Jews and the entire world watched. Now these parallels are unmistakable. Ultra-nationalist leaders, inflated egos, weakened global order. UNO has become almost toothless like League of Nations, and there is indifference, absolute indifference to suffering. The lesson of the 1930s वो कोई distant history नहीं है. It is a warning. Silence before tyranny, then and now, can lead to catastrophe. It is often said that history repeats itself. I'm not sure it does. But if it does, we must learn to read the signs before it is too late. We may not face another world war, but what lies ahead could be something which is far more complex and sinister. A convergence of conflicts, climate catastrophe, mass migrations, internal chaos, and because of the technological protected warfare, an unprecedented storm for which ultra-nationalist leaders who cannot see beyond their noses are unprepared. क्योंकि वो ज़्यादा दूर तो सोच ही नहीं सकते. Democracies must learn from the past. Otherwise, they may sleepwalk into the crisis of their own creation. Now, who will pay the price? It is the ordinary citizen. Right? And there are statesmen who are warning, but they are not being heard today, because in 1930s in UK it was only Winston Churchill who kept warning कि हिटलर को अपीज मत करो, because he can lead the whole world to a disaster, and it happened. Leaders must act preemptively to prevent a scenario that, while it may not mirror कि World War II जैसा हो जाएगा, but it could be equally catastrophic in consequences. Thank you. Jai Hind.